Okay. So like basically we started with CSS, HTML intro तो हो गया था. Okay. Uh, then the next part we are going to start is with selectors. Okay, selectors देखेंगे. And before that, let me share my screen. Screen share है सबको. यस सर. Okay. डॉक्यूमेंट दिख रही है वाली. नहीं सर, ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा. ओके, स्क्रीन नहीं दिख रही ना. नहीं सर. ओके यार, ये इशू क्यों आ रही है. रिकॉर्डिंग तो, शेयरिंग तो ऑन करी है मैंने. टैब शेयर करके देखता हूँ. सो टैब या फिर विंडो. हाँ सर, अभी शो हो रही है. अभी शो हो रही है. हाँ सर. Okay. So like basically the point of CSS is कि whatever tags we have, जो भी tags हम बना रहे हैं उनकी styling करनी है, right? तो HTML is just for the structure of our page. So if I talk about this page itself, so we can see that ठीक है. सो अगर मैं सिर्फ इस पेज की बात करूं तो आई कैन डिवाइड दिस पेज इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स. मैं डिफरेंट टैग्स में इसको या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर में डिवाइड कर सकता हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी द नैप बार. फिर ये एक हेडिंग होने वाली है. ओके, देन वी हैव बटन्स ओवर हियर. कुछ बटन्स हैं हमारे पास एंड लाइक मोस्ट ऑफ देम आर क्लिकेबल्स. तो कुछ लिंक्स भी हैं हमारे पास यहाँ पे. ओके, एंड साइड बार है एंड देन वी हैव टेक्स्ट एरिया और वॉट एवर वी कैन कॉल इट. सो दिस इज वॉट वी हैव इन दिस पेज. तो एक तो हो गई स्ट्रक्चर देना जो हम HTML टैग्स से देख रहे होंगे. ओके, कि वॉट एवर टैग्स इज रिक्वायर्ड टू कीप इन प्लेस. सो कहाँ पे कौन सा टैग यूज करना है. सो दैट इज वॉट HTML tells us. Okay, with whatever structure we are going to have for our pages. So that is the part of HTML जो कि हमने देखा. Now CSS introduction was mostly like कि CSS कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं अपने पेजेस में. ओके, लाइक कितने टाइप्स, कितने वेज में ऐड कर सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग वी सॉ इज द इनलाइन CSS. सबसे पहले तो इनलाइन CSS देखी हमने. देन वी सॉ द इंटरनल CSS. ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर हमने HTML के अंदर ही लिखा. देन वी सॉ एक्सटर्नल CSS बाई क्रिएटिंग अ सेपरेट CSS फाइल. ठीक है, सो ये तीन वेज में हमने देखा कि हम HTML में CSS को कैसे लिंक कर सकते हैं. ओके, बेसिकली लिंकिंग हमने देखी. ओके, सो आज क्या कवर करने वाले हैं. सो सम ऑफ द टॉपिक्स जो कि बहुत ही लाइक दे कैरी इम्पोर्टेंस. ओके, कि व्हाट इज बॉक्स मॉडल, व्हाट आर द फीचर्स. ठीक है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे हम किसी टैग को पिक करते हैं, कैसे उनको स्टाइल करते हैं. ओके, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू डू दैट ऑल्सो. ठीक है, और क्या क्या तरीके हैं स्टाइलिंग के. सो ये सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे. बस फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम देखेंगे कि CSS का जो बॉक्स मॉडल है, what is that, because that is one of the necessary part. ठीक है, फिर आगे देखते हैं सेलेक्टर्स के बारे में. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज CSS बॉक्स मॉडल. आई विल एंड फॉर दैट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कोड. ठीक है, सो मैं VS कोड शेयर करता हूँ. आई एम नॉट एबल टू शेयर द एंटायर स्क्रीन, आई डोंट नो व्हाई. सो मैं एक एक करके विंडो शेयर कर देता हूँ. So now I'll share VS Code, and I guess is the code visible? Is VS Code visible है क्या सबको? यस सर. ठीक है, ठीक है. Let me rename it. Okay, thank you. Okay. Uh, okay. So basically talking about box model. ठीक है, देखते हैं box model क्या चीज़ है exactly. So उससे पहले let me create an HTML. एक HTML लिखते हैं. ओके,
लेट्स मेक इट अ डिव। ठीक है, एक डिव क्रिएट किया हमने, एंड लेट बी देयर वन मोर डिव। ठीक है, सो डिव किस टाइप का टैग है? इनलाइन टैग है या फिर ब्लॉक टैग है? सो व्हाट इज ब्लॉक लेवल सर। ब्लॉक लेवल टैग है? ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ओके, लेट मी पुट सम कंटेंट। ओके, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ कंटेंट ऐड कर देते हैं। ओके, सो वी आर हैविंग टू डिव्स ओवर हियर। ठीक है, अब इसको हम स्टाइल करेंगे और देखेंगे कि व्हाट टू वी मीन बाय बॉक्स मॉडल। ओके, एंड समवन वांट्स टू एक्सप्लेन अबाउट बॉक्स मॉडल, तो लाइक यू कैन प्लीज गो ऑन। ठीक है, आप बता सकते हो व्हाट do we mean by like box model. So I will also copy the path and let's open it. So styling in the browser itself, ठीक है, ब्राउजर में इसको स्टाइल करते हैं और देखते हैं what do we mean by box model। ठीक है, so Google Chrome inspect allows us to style elements here itself। ठीक है, now first thing first, सबसे पहले जो भी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं हमारे, जो भी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ओके, फॉर स्पेसिफिकली ब्लॉक एलिमेंट्स, दे कैरी अ हाइट एंड विड्थ। ठीक है, वो हाइट और विड्थ कैरी कर रहे होते हैं। ठीक है, 50 px, व्हाट इज px यूनिट्स के बारे में अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके, अभी देखते हैं बॉक्स मॉडल के बारे में। सो वी हैव विड्थ ऑफ विड्थ हाइट बोथ ऑफ 50 px एंड 50 px। ओके, बट ये विजिबल नहीं हो रही है, राइट? सो ये तो हमें दिख रही है, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली विजिबल। सो इसके लिए आई हैव वन मोर स्टाइल, ठीक है, जो कि बॉक्स को विजिबल कराएगी। ओके, एनी आइडिया उस टैग का क्या नाम है, उस सर स्टाइल का? या सर ब्राउजर विंडो विजिबल नहीं है। ओके, ब्राउज। वीएस कोड ओनली विजिबल हो रहा है हमको। ओके, लेट मी चेक। ओके, आई गेस आज मुझे स्विच करना पड़ेगा दोनों में बैक टू बैक। ठीक है, अभी विजिबल है। यस सर। ओके, सो अगर मैं इस पे होवर करूं, एग्जैक्टली जो भी हमारा डिव है, सो अगर मैं इस पे होवर करूं, सो आई हैव अ 50 क्रॉस 50 हाइट एंड विड्थ ऑफ माय डिव। ठीक है, अगर मैं इसको नहीं लिखता हूं तो वॉट एवर बी द ऑटो साइज, ठीक है, जो भी ऑटो साइजिंग होती है वो अप्लाई हो जाती है इसको। ठीक है, लेकिन व्हेन वी गिव विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी, सीएसएस प्रॉपर्टी जब देते हैं, तब हमें विड्थ और हाइट मिल रही होती है। विड्थ और हाइट मिलने का मतलब कि जो भी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं हमारे पास, दे आर ट्रीटेड एज, ठीक है, वट एवर ब्लॉक एलिमेंट्स वी आर हैविंग, दे आर ट्रीटेड एज अ बॉक्स। उनको एज अ बॉक्स हम ट्रीट कर रहे होते हैं स्टाइलिंग के टाइम। ठीक है, तो जब हम एज अ बॉक्स ट्रीट करते हैं, एज अ 2D बॉक्स अभी के लिए, ठीक है, और भी देखेंगे 3D स्टाइलिंग ऑन ऑल दोस थिंग्स विल सी, बट एज अ 2D बॉक्स उनको कंसीडर करते हैं। ठीक है, जिसकी विड्थ होगी और हाइट होगी। ओके, सो विड्थ और हाइट पता चले, सो लेट मी ऑल्सो गिव वन मोर स्टाइल जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर बोलते हैं इसको। देन फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज द विड्थ ऑफ द बॉर्डर। सेकेंड थिंग, व्हाट इज द लाइक स्टाइल ऑफ द बॉर्डर। ओके, आई विल जस्ट इंक्रीज द साइज। ठीक है, मैं साइज को इंक्रीज करूंगा। ओके, सो फर्स्ट थिंग विड्थ हाइट, थर्ड इज द बॉर्डर। ठीक है, जो कि बॉर्डर हमने यहाँ पे दी हुई है। ओके, नाउ आई गेस द बॉक्स इज अ बिट विजिबल। ठीक है, अभी थोड़ा विजिबल है। ऑल्सो आई विल असाइन सम मोर प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखते हैं, एंड विल डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ देम। ठीक है, पैडिंग, देन लेट्स गिव इट अ पैडिंग ऑफ 4 pixels। ओके, 4 pixels, and there is something called as, okay, so what is padding exactly? तो एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज पैडिंग। मार्जिन तो मतलब बाहर से हो जाता है, और पैडिंग जो है तो मतलब अंदर के कंटेंट के लिए जो हम लोग मार्जिन यूज करते हैं, वो पैडिंग करते हैं। सर ओके, कंटेंट से सर जैसे कि कंटेंट को किसी को सेंटर में करना है या फिर लेफ्ट करना है, राइट करना है, ओके, उसके लिए यूज करते हैं पैडिंग। मतलब जैसे कि सर यहाँ पर आई एम जो बॉर्डर आ रहा है एकदम से कॉर्नर से लगा हुआ है, उसको डिस्टेंस में करने के लिए, इसीलिए।
ओके, ठीक है। सो कैन वी से दैट टू लाइक गिव अ स्पेस बिटवीन बॉर्डर एंड द कंटेंट, मतलब स्पेसिंग जो भी हमारी बॉक्स की बॉर्डर है और कंटेंट के बीच में स्पेस देने के लिए यूज करते हैं, पैडिंग, राइट? ओके, Yes. या ठीक है। ओके, सो ये सारी प्रॉपर्टीज वी हैव फॉर अ डिव। जो भी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगी वो एज अ बॉक्स ट्रीट की जाती हैं, ठीक है, एंड द स्टाइलिंग इज सिमिलर टू एज अ बॉक्स। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको सबसे पहले वॉट एवर एलिमेंट्स यू हैव, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू हैव टू असाइन हाइट एंड विड्थ, सबसे पहली चीज। ओके, once you have assigned height to it, that is space occupied by that element, ठीक है। ऑल्सो वेन एवर यू गिव अ बॉर्डर, ठीक है, जब भी आप बॉर्डर दे रहे होते हो इसको, ठीक है, वॉट एवर बॉर्डर यू गिव इट, वो भी काउंट होती है। ओके, दैट इज ऑल्सो काउंटेड हाइट प्लस वॉट एवर यू आर हैविंग, ठीक है, जो भी आपके बॉक्स की हाइट होगी उससे अलग से उसको हम काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है। देन वी हैव आर मार्जिन एंड देन वी हैव आर padding. So what exactly is box model? So if you are able to see this thing, ठीक है, अगर आपको ये डायग्राम दिख रही है यहाँ पे, so we have 100 क्रॉस 100, इट इज कॉल्ड एज कंटेंट, ठीक है, इसको हम कंटेंट बोलते हैं, ठीक है। फिर आती है हमारी पैडिंग, ठीक है, जो कि 4 पिक्सल्स की है, ओके। देन आती है हमारी बॉर्डर, ओके, वॉट एवर बॉर्डर वी आर हैविंग, एंड देन फाइनली वी हैव आर मार्जिन, ठीक है, फाइनली हमारी मार्जिन आती है। सो एग्जैक्टली टिल बॉर्डर, जो जो एग्जैक्ट साइज है हमारे बॉक्स का, व्हाट इज द एग्जैक्ट साइज, लाइक हाइट एंड विड्थ टिल बॉर्डर? 108 पिक्सल। 108, आई श्योर? Okay, so are you sure it's 108? Okay, so so guys, what's exactly is the height and width border tag? 100 plus 4 plus 4, right? So 108 and plus 4 and 4, 116. Are you guys getting the point? No, sir. यस Please सर। repeat, sir. Okay, so 100 cross 100, the width height you have given here is just for the content, ठीक है। Now when you give padding, तो ओरिजिनल साइज इंक्रीज होती है बॉक्स की, ठीक है, वो 100 में Hmm. इंक्लूड नहीं होता है। गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. सो जब आप 4 की पैडिंग दोगे तो हाइट और विड्थ में 8 का इंक्रीज आएगा, राइट? Right. ठीक है। जब आप बॉर्डर देते हो तो दैट इज ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ द साइज, तो फिर 8 का इंक्रीज आया, तो 108 प्लस 8, 116, राइट? Right. ओके, सो दिस इज व्हाट बॉक्स मॉडल इज, ठीक है, यही हमारा बॉक्स मॉडल। फर्स्ट कम्स द कंटेंट, सेकंड कम्स द पैडिंग, फिर आता है बॉर्डर, देन कम्स द मार्जिन। ओके, you see the diagram over here, right? Okay, so this is the exact size which our box is going to occupy, ठीक है। any properties you want me to repeat, या फिर like what is the use of those properties or something, is it clear? यस सर। Yes, sir. ओके, ओके, ठीक है। सो या दिस इज व्हाट वी कॉल एज बॉक्स मॉडल, ठीक है, इसी को हम बॉक्स मॉडल बोलते हैं। देर इज वन मोर थिंग जिसको हम आउटलाइन बोल रहे होते हैं, ओके, कैन गिव आउटलाइन ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज आउटलाइन, ठीक है, बट द पॉइंट इज आउटलाइन इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर बॉक्स मॉडल, ठीक है, आउटलाइन हमारे बॉक्स मॉडल का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। So this is not considered as the box model part. So if interviewer ask what is considered in the box model, so margin is there, padding is there, border is there, and height and width are obviously there. ठीक है, तो ये है बॉक्स मॉडल एंड विल, सो वट एवर एलिमेंट्स, वट एवर ब्लॉक टैग्स आर प्रेजेंट, दे विल, सो वी हैव टू अरेंज देम इन सच अ वे, ठीक है, कि हम उनको हाइट और विड्थ दे के ही अरेंज करेंगे अपने पेज में। दीज आर सम ऑफ द स्टाइल्स। Okay, let's talk more about these properties, border, padding and margin, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। Let's also assign the properties to another div,
100 pixels. Let the height be 100 pixels, and let's give it 100 pixels too. Okay, the border goes something like this. Okay, so let it be 2 pixels solid and black. Okay, I guess that's fine. Okay, let me increase the size. Let's make it 200 pixels. Now this margin has four things in it. ठीक है, margin में four like चार properties assigned होती हैं. ठीक है, so what are the four properties in this margin property? So left, right, top, bottom. Okay, left, right, top, bottom. Okay, is the order correct? Top, right, Mm-hmm. bottom, left. Correct. Okay, so सबसे पहले आती है हमारी top. Okay, so whatever style you give here, the first thing first comes the top. So सबसे पहले हम top को assign करते हैं. Then comes our right. ठीक है, सब फिर right आता है. Then comes the bottom, so let's give it 8 pixels. ठीक है, and then comes the left, so let's give it 16 pixels. ठीक है, this is what the ordering is. ठीक है, ordering ये है. And so why are we getting the whole this complete thing as margin? This right side, why it is complete showing as margin? It is only 4 px, right? But we see that right side is complete margin because it's a block tag, right? It will not allow any other element to come here. Guys, are you getting the point? Yes, sir. ठीक है. So because we are using div. Yes, obviously, so margin होती है ताकि कोई और एलिमेंट वहां पे ना आ पाए. Okay, so this margin is also called as, so this is a kind of shorthand property. ठीक है, इन इस प्रॉपर्टी को shorthand property भी बोलते हैं. shorthand properties means एक प्रॉपर्टी जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज को असाइन कर सकते हैं. ठीक है, अब ये काम दिस थिंग वी कैन ऑल्सो डू विद मार्जिन टॉप. ओके, मार्जिन टॉप भी आप दे सकते हो. यू कैन जस्ट ओवर राइट इट. ठीक है, सो आप इसको 20 पिक्सल्स भी कर सकते हो. ठीक है, यू कैन जस्ट ओवर राइट इट आप चाहो तो. Otherwise, this is the shorthand property. Everything is included. So margin top, right, left, and bottom. Okay. So you go with top, right, then bottom, and then left. Finally. Also, margin. Okay. One more question. So can I give a negative margin? Yes, sir. Okay. So let's assign some negative margin. So this is the bottom one, right? For the bottom one, let's make it -8 pixels. Okay. Guys, are you getting the point? What's happening with negative margin? Yes, sir. Overlapping. Yes. So this technically this div is saying that my height is only this much. ठीक है, जब आप माइनस में जाते हो तो आप टेक्निकली बोलते हो कि ओके यू कैन अप्लाई माई स्पेस. ठीक है, सॉरी यू कैन ऑक्यूपाई माई स्पेस. ठीक है, सो दिस इज वाई वी हैव नेगेटिव मार्जिन. वी शुड बी अवॉइडिंग नेगेटिव मार्जिन. ठीक है, नेगेटिव मार्जिन अवॉइड करनी चाहिए, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए. लाइक ओके, ओनली इफ इट्स ब्रेकिंग स्टाइल देन यू कैन यूज, अदरवाइज वी शुड बी अवॉइडिंग इट. Okay, so this is what we have margin for. Let me remove this. Okay, similar thing happens with padding. Okay, padding is also a shorthand property. The same thing happens here also. Top, then we have our right. Okay, then comes the mm, bottom right. Then we have our left. So if you see that whenever we say padding, my box size is increasing, right? You guys see this, the original size of my box. Okay, Yes, so sir.
So this is also a proof that padding is property of box model. ठीक है, तो ये like this is also one proof. Okay, the next point is, can we have negative padding? Okay, so let's try to give it. Okay, so we actually do not have something like that, but what if we give something? See, it is invalid property. Okay, this property is not valid. Okay, so we'll just remove this. So we do not have something called as negative padding. Margin negative होती है, padding negative नहीं होती है. ठीक है. So these like these two properties are padding and margin. Okay, so four properties we have seen. Single property we have seen. We also have combination of two properties. ठीक है, दो properties की combination होती है. Okay, so what is exactly this? 4 pixels and 8 pixels. So what exactly is 4 and 8? Okay, so सर 4 pixel The both right and से top. और 5 pixel that से. ठीक है, सो टॉप बॉटम एंड लेफ्ट राइट. ठीक है, ये टॉप और बॉटम और लेफ्ट और राइट होता है. ठीक है. Okay, you see this like ये top, bottom and left, right. Okay, and then we have three set of properties also. ठीक है, तीन set of properties भी होती हैं. Let's see that also. ठीक है. So what's happening now? So we have top, then left, right, and then bottom. ठीक है. ओके, सो दीज आर दी फोर कॉम्बिनेशंस. ठीक है, यही चार कॉम्बिनेशंस हैं हमारे. सो ओके, प्ले अराउंड विद इट एंड सी इट व्हाट वी हैव. ठीक है, सो दिस इज दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज विच विल बी मोस्टली यूजिंग. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम विल बी यूजिंग दिस. Okay, for our box. Okay, let me increase the content. Okay, let me write something over here so that I have more content. Okay, okay. Now, sometimes we arise at this type of situations. Okay, so any idea how we can like control the text or something? Any properties? So boxes provide one more property. Okay, we call it overflow. Okay, and it can be either auto, so which will be giving us a scroll basically in our box. Okay, otherwise we have hidden too. Okay, so which will just hide it, otherwise a scroll is obviously there. Okay, so you have something like something this sort of. Okay, so this is what we'll be dealing with. Okay, there are lots of properties to apply and play around. Okay, so which we'll see one by one. Okay, any doubt still here? Any doubt in box model, guys? No, sir. Okay, okay, that's nice. So I will switch back to code, and also okay, next thing, how are we going to pick the text? So like if for styling obviously, so we call it selectors. Okay, and we'll see what are the types and how we can use it. I will share my VS code again. Is the code visible? Okay. So talking about the attributes, can someone tell? We have some CSS selectors, so please throw some light on it. कौन कौन से selector हैं हमारे पास?
Sir, ID सर selector, एक्सटर्न class selector, universal selector, and grouping selector. ओके, सो एक हो गई आईडी. ओके, सो दिस इज यूनिक राइट. ग्रुप सेलेक्टर्स के एग्जांपल. सर ग्रुप सेलेक्टर जैसे कि मतलब पैराग्राफ है, 10 हम्म. पैराग्राफ है, वो एक ही सिलेक्ट करके उसमें स्टाइल्स दे दिए अपने। ओके, ठीक है. क्लास ऑब्वियसली ऑब्वियसली सही बात है, क्लास भी है. ओके, फॉर एग्जांपल. ठीक है. एनी अदर. सर एलिमेंट सेलेक्टर एलिमेंट सेलेक्टर वेरी करेक्ट. ठीक है, एलिमेंट सेलेक्टर्स है हमारे पास. टाइप सेलेक्टर। टाइप सेलेक्टर ठीक है. ठीक है, हाँ मतलब वही एक ही बात. ओके, ठीक है. विल स्टडी दैट वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एट्रीब्यूट सेलेक्टर ऑल्सो. ठीक है, एक सेलेक्टर होता है जिसको एट्रीब्यूट सेलेक्टर कहते हैं. ठीक है, विल सी दैट ऑल्सो. सो लेट्स गिव इट सम एट्रीब्यूट और लेट इट बी. ठीक है. Also let me do some nesting. And okay, that's it. So I am a span in paragraph. I will again switch back to Chrome. I don't know like why I have to switch today. I cannot share my entire screen. सर Is the दैट्स नॉट दैट इज शेयरिंग जस्ट डू once yeah. so go directly on VS Code. Okay. Uh, did it go to VS Code? The screen? No, no. Yeah, yeah. I guess there is some. We need a restart, but let it be. Okay, I'll check it. Okay, sir. Maybe some update is required with Chrome. So these guys, I don't know what these guys do exactly. Okay, coming back to the point. So one type of selector. So let's start with some unique selector. Okay, so ID is unique, right, guys? Am I right about that? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So ID is unique, and if I want to style it, I can simply say, can I edit this also? Okay, I cannot edit this, right? So I can say, um, give some height and width. Okay, so let's assign some height, let's say 200 pixels. Okay, then here goes the width with the same 200 pixels, and finally the border we are having. See, the point is there are lots of styling. ठीक है, टेक्स्ट एंड प्रॉपर्टीज. बट मतलब ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द यूज केस. आप जैसे जैसे डेवलप करोगे इट विल गेट इन लाइक हैबिट. ठीक है. वी हैव क्लास span. Can I not directly style it? Why it is giving me always element? Okay, I will just add a CSS, a little bit of CSS. Okay, let's come back with that. So okay. Okay, let's come first here, then we can come back to the browser. So going with the styles for the ID, we can simply say something like div2, and we can give the style. Okay. So for class, what do we do? What do we use for class? So dot. Yes, obviously. So we use dot for classes. Okay.
Then comes the group selector. So obviously class is also a group selector. So something like this will work. Okay. So let's say you want to style the entire div of the page. So you can write something like this. Okay. Also, if you want to write or style entire paragraph, you can do something like this. Or I do not need this. What I can do, I have same style for a div and p. Sir, make any class or take by heads. Okay. Or can I do? Yes, yes, obviously. You can use a comma also, right? Okay. Not need to add class if you have same styles. Okay, but this is the okay. Obviously, the point is कि if you want to style entire div, अगर सारे divs को style करनी है तब करेंगे, ठीक है? Class is obviously one more choice over here, ठीक है? Next comes one more type of selector, ठीक है? थोड़ा सा unique. What if I want to style the span which is inside p tag? मतलब कि मैं सिर्फ इस स्पैन को स्टाइल करना चाहता हूँ. p then span. ओके. ओके. ठीक है. वेरी करेक्ट. वेरी करेक्ट. Now I have p inside p. Okay, and then I have a div. Okay, just have a look at it. What I'm writing. Okay, then I have a span. So okay, I am super nested. Okay, okay. So this is style we have written over here. What we call this style? Like what we call this selector? Okay, so we call it child selectors. Okay, basically the name of these type of group is we call it combinator selector. ठीक है, इनको combinator selector बोलते हैं. We'll check it out. Okay, इसको देखते हैं. um, okay, this is style, this will span, like this will style whatever span present inside the paragraph tag. ठीक है, तो ये span भी color होगा, ये span भी color होगा, but this span will not get the style. ठीक है. Finally we have, if we want to style the direct child, ठीक है, अगर हमें सिर्फ direct child style करनी है p की, तो we have something like this. ठीक है. So we have p, then a bracket, okay, then we have a span. It means that style only direct child of span. ठीक है, ये direct child नहीं है. Okay, so this will not be getting styled. Okay, let me put some style and check it out in browser. So what I will do here is I will assign some colors. So that is the shortest way to check it out all the things. I will give the color as let it be red. Let's start with that. Okay, and the font size with 16 pixels. Okay. Okay, one more thing. What if I want to style the complete page with a style? I Yes, can, sir, take body. or I can take this star also, right? Yes, sir. Okay. So we can go with the star, we can go with body, we can go with HTML, right? Okay. Let's add all the styles one by one and let's check it out. सर यूनिवर्सल सेलेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं? Universal selector. Yeah, that is I guess the universal selector is star. I guess. So this is what universal selector is. So Yes. everything will be selected here. Okay. Yep. Yes. Yep. Thank you. So this is I didn't know the name. I knew the name, but I forgot it. But yeah, this is universal selector. Okay. So let's do some separation and let's check it out. So mostly what we'll be using is either I will be using the ID, either will be using the class. ठीक है.
these have यूज केस, ठीक है, बट थोड़ा रेयर यूज केस है, बट मे बी आई डोंट नो, लाइक अगर कभी यूज हुआ तो यू कैन यूज दैट, बट लाइक कीप लाइक ऑलवेज ट्राई टू कीप इट सिंपल, ठीक है। लाइक आप ऐसे पेज को डिजाइन करो यू डू नॉट हैव टू लाइक टेक लॉट्स ऑफ टाइम स्टाइलिंग इट, कि सेलेक्टर खोजने में ही टाइम लगे, ठीक है। सो स्टाइल इन सच अ वे, ठीक है। And although we have lots of options, but yeah, obviously like write some intelligent code, right? Okay, let's see. So div 2 we have in color red, and all these colors are there. Okay, so let's check it out. I will again switch back to Chrome. Okay, let me also increase the size. Okay, it's fine. Okay, let's try to inspect it one by one. Okay, so it says that I am a div and it is getting this color. Okay, so ये तो होगी हमारी group tag, right? So whatever the group was there, okay, so it is getting this. Then comes the id, ठीक है, so फिर हमारी id आई, and then we are having this, then finally we are having the span which has its own given class, ठीक है, जिसके पास खुद का क्लास है, and yes, then again the p is having, okay, see this guys, okay, आप देखो यहाँ पे डायरेक्ट p से स्पैन जो भी चाइल्ड है, ठीक है, दिस इज व्हाट स्टाइल इज गेटिंग। ओके, एक ये भी स्टाइल है, ठीक है, दिस स्टाइल, इस स्टाइल का मतलब है कि p के अंदर जितने भी स्पैन है सबको करो, बट इसका मतलब है कि p का जो डायरेक्ट चाइल्ड है ना, लाइक द जस्ट द डायरेक्ट चाइल्ड, दैट शुड ओनली बी स्टाइल्ड। ये चीज समझ में आ रही है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर रिपीट करना फिर से। ओके, एग्जाम्पल ही देख लेते हैं सीधा। तो एक, अच्छा, एक और पी के अंदर स्पैन था हमारे पास, राइट? ये पी है, ठीक है, दिस इज पी, देन वी हैव द डिव, एंड देन इसके अंदर स्पैन, ठीक है। ओके, वेयर वाज दैट टैग? एक टैग हमने बनाया था ना। ओके, लेट मी इसमें चेक। सर ये हो रहा है जैसे कि एक बी टैग है उसका पर्टिकुलर, उसके बाद जस्ट स्पैन ने यूज किया है, और उसके बाद जो सर एक डिव ओपन करके उसके अंदर जो स्पैन लिया है वो नेक्स्ट वाले में यूज हो रहा है। यस, यस, ठीक है, सो आई गेस ये यही पी टैग है, बट दिस वी एडेड इनसाइड अ पी टैग, राइट? ओके, लेट मी चेक, लग रहा है कुछ कोड में हमने गलत लिखा है एचटीएमएल में। सो दिस इज स्पैन, देन वी आर हैविंग अ पी टैग। ओके, सो पी के अंदर डायरेक्ट पी चाइल्ड है। ओके, ओके, आई गेस आई गॉट द पॉइंट, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है, ओके, हाँ ठीक तो है, लाइक ओके, इट्स टोटली फाइन, ठीक है। ये स्पैन दिस शुड बी कमिंग इनसाइड p, so why is not div rendered inside p? Because we cannot render a div inside p tag. Yes, 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 okay, so this is one more thing guys, ठीक है, we cannot have a div inside a p tag, ठीक है। Let me change the style to something else, ठीक है, इसको मैं एक बार चेंज कर देता हूँ। सो लेट्स चेंज द एग्जाम्पल टू सर div। अपन तो स्पेन में एक ही स्टाइल लगाई थी, ये स्पेन में जो पी टैग लिया था अपने लास्ट में उसमें 2 स्पेन थे। यस, 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 तो यस। स्पेन में ये सब डिफरेंट डिफरेंट कलर क्यों आ रहा है? अपने तो स्टाइल एक ही लगाई थी सेम। यस, div p में रेंडर नहीं हो रही है, div जो है p के बाहर रेंडर हो रही है, इसलिए गड़बड़ हो रही है। मैं इस कोड को चेंज कर देता हूँ थोड़ा। ओके, इट मीन्स दैट, सो ऑब्वियसली वी कैन नॉट हैव अ div इनसाइड स्पैन, मतलब हम div को p के अंदर नहीं लिख सकते, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ ब्लॉक एलिमेंट। ओके, अभी सही है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो लर्निंग फॉर अस, मतलब मेरे लिए भी।
यू कैन नॉट हैव अ div inside it, और मैं थोड़ा सा कोड चेंज करता हूँ। आई गेस वी आर गुड टू गो। ठीक है, ओके, लेट मी रिफ्रेश द कोड। ओके, नाउ इट्स फाइन। ठीक है, सो अभी 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 अगर हम देखें, सो देन वी, व्हाट आई हैव डन इज, आई हैव div देन स्पैन। ओके, फिर मैंने div के अंदर डायरेक्ट स्पैन रखा है, जो कि ये वाली स्टाइल ले रहा है। वेयर एज div के अंदर p के अंदर एक और स्पैन है, ठीक है, वो ये वाली स्टाइल ले रहा है। तो जब वो एंगुलर लाइक, जब वो एंगुलर ब्रैकेट नहीं होता है, ओके, इन दैट केस ये सारे चाइल्ड्स को कंसीडर करेगा। इसका मतलब कि div के अंदर जितने भी स्पैन्स आए, भले वो कितना भी नेस्टेड हो, उसको ये कलर मिलेगा, बट जो डायरेक्ट चाइल्ड होगा उसको ये वाला स्टाइल मिलेगा। क्लियर है क्या? ई के अंदर हम स्पैन को रख सकते हैं। हाँ, पी के अंदर रख सकते हैं, बिकॉज वो इनलाइन टैग हो गया ना वापस से। जी। ठीक है, सो यही थी हमारी लाइक इन दोनों टैग्स के बीच में डिफरेंट। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इसमें, बट ठीक, ये सारे चाइल्ड को कंसीडर करता है, ये सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड को कंसीडर करता है। रेस्ट आर लाइक इजी वंस। ठीक है, बाकी तो इजी हैं, तो वो तो आप मतलब समझ जाओगे। ये इसमें ही थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, एनी डाउट्स इन दिस वन गाइस? कोई डाउट है? ओके, ठीक है। सो वी हैव सिंपल सेलेक्टर नेम आईडी क्लास, देन कॉम्बिनेटर सेलेक्टर जो कि रिलेशनशिप वाला अभी हमने देखा। ठीक है, आप इसमें और भी हैं, बट द इम्पोर्टेंट वंस वी हैव ऑलरेडी सीन। ठीक है, सो ओके, सो ये तो हमने देख लिया डिसेंडेंट वाले। फिर चाइल्ड सेलेक्टर, ये भी देख लिया हमने। एडजेसेंट सिबलिंग प्लस वाले हैं, बट ठीक है, मतलब आई डोंट नो, लाइक इतना कुछ खास यूज केस नहीं है इसका। सो मतलब आप देख सकते हो या फिर नहीं भी देखोगे, लाइक इट चलेगा, इट्स फाइन। ये सब जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। सिबलिंग लाइक जो भी नेक्स्ट एलिमेंट्स होंगे ना उसके, तो वो सारे अगर कंसीडर करेगा। इट सेज दैट लाइक, अगर इसका डेफिनेशन है कि फॉलोइंग एग्जांपल सिलेक्ट्स ऑल पी एलिमेंट्स दैट आर नेक्स्ट नेक्स्ट सिबलिंग ऑफ डिव एलिमेंट्स। मतलब ठीक है, इसका यूज केस काफ़ी, आई डोंट नो, लाइक कुछ और स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई इट आउट, सिबलिंग टैग्स क्रिएट करो, ट्राई करके देखो। ठीक है, नेक्स्ट इज सूडो क्लास सेलेक्टर्स। ठीक है, सूडो क्लास सेलेक्टर्स। ओके, सो ये कह रहा है कि सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन अ सर्टेन स्टेट। ठीक है, बेस्ड ऑन अ सर्टेन स्टेट। एनी आइडिया अबाउट दिस काइंड ऑफ सेलेक्टर्स गाइस? किसी को आइडिया है क्या, व्हाट आर सूडो क्लास सेलेक्टर्स? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस होवर थिंग, एक्टिव, विजिटेड, ये सारी चीजें? यस सर, आई नो। ठीक है, सो ओके ओके, व्हाट डू वी मीन बाय होवर? होवर का मतलब क्या होता है? सर मतलब सर किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो उसका कलर चेंज हो, उस पे सर कुछ कुछ कनेक्ट चेंजिंग करने आए। से पहले ही सर माउस को अगर उसके ऊपर लेके जाते हैं तभी कनेक्शन हो जाएगा। यस यस, ऑब्वियसली। सो होवर मतलब कि जो भी माउस ओवर वाले इवेंट्स होते हैं ना, तो उनके बेस पे हम सूडो स्टेट सेलेक्टर बोलते हैं। स्टेट मतलब कि किसी सर्टेन स्टेट पे, तो होवरिंग एक स्टेट हो गया, लाइक एक्टिव एक स्टेट हो गया, जो कि अभी हम देखेंगे। ठीक है, देन विजिटेड एक स्टेट हो गया, जो कि एंकर टैग के केस में आता है। ओके, सो लेट्स हैव एंकर टैग। ठीक है, मैं कोड पे स्विच करता हूँ फिर से एक बार। ओके, तो ये तो हो गई जनरल स्टाइलिंग जो हमारी है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट इज विल ट्राई टू हैव, या फिर इन्हीं टैग्स पे हम रख सकते हैं कि लेट मी ऐड अ आईडी फॉर दिस आल्सो। ठीक है, इसको भी एक आईडी देते हैं, लेट्स कॉल इट div3। ठीक है, नाउ माय पॉइंट इज माय यूज केसेस, दैट माय यूज केसेस कि व्हेनेवर आई होवर ओवर div3। ठीक है, जब भी मैं div3 पे होवर करूं, ओके, सो जब भी मैं div3 पे होवर करूं, आई वांट सम चेंज इन स्टाइल। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं? जो भी आपकी सेलेक्टर्स है उसको लिखो। ओके,
देन कम्स कोलन, ठीक है, सिंगल कोलन आता है, एंड वॉट एवर द स्टेटस, ठीक है, जो भी स्टेट होगा वो आप लिखते हैं यहाँ पे। सो डिफ 3 के होवर पे आई वांट द चेंज इन कलर, ठीक है, आई वांट द चेंज इन कलर, ओके, टू let it be brown, okay, any color you want, okay. Also let me add some more code so that बार बार switch ना करना पड़े, okay. So let's have anchor tag, ठीक है, href is equals to tag 1, so let's say link 1, okay. Let's have one more link 2 and link 3, okay. एंकर टैग हैज ए स्पेशल प्रॉपर्टी जो कि अब हम देखेंगे, स्टाइलिंग भी होती है उसमें अलग से, ठीक है, देखते हैं उसको। सो द स्टेट हेयर फॉर एंकर टैग इज, या तो आपकी एंकर टैग विजिट हो चुकी होगी, इट मीन्स द लिंक हैज ऑलरेडी बीन विजिटेड, सो यू वांट टू सेट द कलर टू ब्राउन मे बी, ठीक है। देन एक्टिव, ओके, एक्टिव कौन सी स्टेट होती है? ओके, जब आप उस पर क्लिक कर रहे हो तो एट दैट मोमेंट इट इज एक्टिव, ठीक है। सर विजिटेड में क्या होता है? विजिटेड, ओके, अभी देखते हैं, ठीक है, अभी देखते हैं, आप बताओ क्या, लाइक गेस करो व्हाट कैन बी विजिटेड। तो जैसे किसी भी साइट पे हम विजिट कर चुके हों तो उस पर कुछ चेंज कलर कर दें, यहाँ पे कलर चेंज हो जाए, इस साइट पे ऑलरेडी विजिट हो चुका है। यस, यस, ऑब्वियसली सही बात है, बिल्कुल सही बात, तो वही होती है कि इट इज ऑलरेडी बीन विजिटेड, ठीक है, विजिटेड है, एक्टिव एंड व्हाट एल्स डू वी हैव, और क्या है हमारे पास? ब्लैंक चेक डिफाइंड, ओके, ठीक है। इनएक्टिव। इनएक्टिव, इनएक्टिव, इनएक्टिव है या डिसेबल्ड है? Disabled है, I guess. Depends user enablers that are in a disabled state. Such. Okay. I'm not sure of this. ठीक है, use कर लेते हैं. Let's see. Maybe we find something. ये बटन्स के केस में यूज होता है, जो डिसेबल्ड वाली पार्ट है ना जो आप कह रहे हो, तो ये डिसेबल्ड बटन के केस में होता है। एंड वन ऑफ द बेटर यूज केसेस, इफ यू आर फिलिंग अप अ फॉर्म एंड इट इज आस्किंग फॉर ईमेल आईडी पासवर्ड, तो दोनों फील्ड्स में कोई भी फील्ड मिसिंग हो, सो यू कैन हैव अ स्टेट ऑफ डिसेबल्ड कि यू कैन नॉट सबमिट इट until you like have this style, right, something that sort of, ठीक है। ओके, लेट्स, ठीक है, काफी हो गया, लेट्स चेक इट आउट। Basically the point is कि it is not something like I learned in a single day, so it is mostly like use case specific, काफी use case specific है, ठीक है। So let's hover over what we had, this div 3, right? So let's hover over this div 3, okay. Okay, the color should be changing, right? Okay, so this is okay, let me put it to hover state, okay, एक minute, give me a minute guys। okay, so we can force element state from here also, ठीक है, इसको hover state में रखते हैं। so we have the color as brown, ठीक है, we have the color as brown, but we do not have any content, so let's add some HTML in it। in hover state, okay, okay, so this is one more of a state, ठीक है। so div 3 has a state which is hover state, ठीक है। जब भी आप इस पे होवर करोगे, ओके, होवर मीन्स वट एवर द माउस होवर केसेस, ठीक है, तो इसकी कलर चेंज होगी, ओके। वी कैन ऑल्सो फोर्स स्टेट, सो आई विल जस्ट फोर्स स्टेट फ्रॉम द क्रोम इट सेल्फ, सो आई कैन फोर्स होवर ओवर दिस एलिमेंट एंड दिस इज हाउ इट लुक्स, ठीक है। ओके, लेट्स चेक दीज टू, ठीक है, सो इनको चेक करते हैं। सो व्हाट आई पुट ऑन द एंकर टैक्सेस, ओके, सो अगर मैं फर्स्ट एंकर टैग, लाइक these three anchor tags are there, ठीक है। so I have a active state, okay, so
Okay. So whenever this is being active, so the color is changing, okay, which we choose to be chocolate, okay, and this is what we are having. So this is what we have already done, okay. Sorry, it has to be visited, right? So this is the visited color, exactly, okay. Now these three links are getting the color change because they have the same link one by one, okay. Let me change the link itself. I will put something over here. I'll put something over here. So I can see that whatever link is visited, that is only having this. Okay. So at the moment of clicking, for a small time period, I'm getting this. I'm getting this active status. Okay. For a small time period. Look at it. Okay. So for a small time, we are getting that. Okay. So that is what active state, and all other states are also over here. The target is there. Focus within. Focus visible. So these are in case of drop down or something. Okay, try it out, okay, try it out, try the tags and see how it works, okay. So this is based on state, ठीक है, ये state based होते हैं, okay, these are not the permanent ones, ठीक है, so ये सारे state based होते हैं, and yes, like check the things out, okay. So these type of tags are called these type of selectors are called pseudo state selector, ठीक है, इनको हम pseudo state selectors बोले होते हैं, ओके। फाइनली देर इज वन मोर ग्रुप, ठीक है, एक और ग्रुप है, सो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट इट, ठीक है, ओके, बेसिकली देर आर टू बट द लास्ट वन, ओके, लाइक चेक इट आउट, आप उसको चेक करो व्हाट इज एट्रीब्यूट सेलेक्टर, बिफोर वी हैव अ सूडो एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है, so let's take two of the examples of pseudo element selector. I will again switch back to code, ठीक है, ओके, ओके, ये तो गई सूडो स्टेट सेलेक्टर, ठीक है, सूडो एलिमेंट सेलेक्टर, फॉर एग्जांपल आई हैव द पैराग्राफ, ठीक है, I have the paragraph, I will say I'm okay, I'm the first line or something like that, first line or something like that, ठीक है, then I have a break line, okay, and I will say that I'm the second line. The point is, what if the requirement comes, we have to style the first word of our paragraph, ठीक है, ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि सिर्फ फर्स्ट वर्ड को ही करना है या फिर फर्स्ट लाइन करनी है या फिर फर्स्ट लेटर करना है, सो वी हैव थिंग्स फॉर दैट आल्सो, ठीक है, उसके लिए भी हमारे पास सिलेक्टर्स हैं। फर्स्ट लेटर सिलेक्टर, व्हाट इज द सिलेक्टर फॉर फर्स्ट लाइन, यू वांट टू स्टाइल द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ, एनी गेसेस? अगर सिर्फ फर्स्ट लाइन कलर करनी है तो उसके लिए भी हमारे पास सिलेक्टर्स हैं, राइट, जस्ट फॉर द फर्स्ट लाइन। एंड हाउ टू नो दैट इट इज अ सूडो एलिमेंट या फिर सूडो स्टेट, एलिमेंट मतलब एलिमेंट स्पेसिफिक, लुक एट इट, सो ये किसी पूरे टैग की बात नहीं कर रहा है, ये किसी पार्ट की बात कर रहा है, राइट, या तो ये लेटर की बात करेगा या तो लाइन की बात करेगा, बट दिस इज स्टेट, ठीक है, इसको कंटेंट से मतलब नहीं है, दीज आर स्टेट्स, ठीक है, वो पूरे टैग की स्टेट की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, ओके। देन वी हैव ठीक है, आफ्टर बिफोर भी है जो कि इंपॉर्टेंट है, विल सी इट लेटर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको। देन वी हैव फर्स्ट लाइन, ठीक है, सो रिवाइज ऑल दीज, ठीक है, इसको रिवाइज करो आप लोग, लेट्स मेक द कलर टू मे बी चूज दिस वन, ओके, लेट्स चेक इट आउट। I will share the
window again. Okay, let's open this. Okay, so we can see that if we talk about the first word selector, ठीक है, अगर हम first word selector की बात करें तो ये है हमारे पास I and this I, ठीक है. So ये दो I है हमारे पास and these are definitely the part of paragraph. Paragraph के part हैं, right? Yes, yes, obviously this is the part of paragraph, ठीक है. And for this one also, तो ये तो हो गई first line. So remember the first line we gave the color, ठीक है. This is the first line thing, ठीक है. So ये हमारा first line था जिसको हमने color किया. So these type of selectors are called as pseudo element selector, ठीक है. इनको pseudo element selector बोलो. Any issues till here, guys? Any doubts? Okay, that is awesome. ठीक है. There is one attribute selector also, but I want all of you to have a look at that one. Okay. Uh, and yes, so please go through it once. Okay, go through करो उसको. Let's open this in other tab. And like, how many of you have completed the resume project? नो सर। How many of you have started? जी सर, Group C, right? कंप्लीट नहीं हो सकता। ओके, क्या, ठीक है, ठीक है. जस्ट तो द पॉइंट इज कि जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, ओके, ट्राई टू अप्लाई इट, ठीक है. बिकॉज मतलब ऑब्वियसली आई एम लाइक showing all the tags. So if you have any doubt, so I got a doubt from a student. I guess Aditya asked, right? Okay. Like you can yeah, yeah, thank you. Like, okay, so it's not about the classes, ठीक है. आप बिना क्लासेस के भी पूछ सकते हो, ठीक है. अगर कोई भी डाउट आए between the assignments, so please ask freely. Okay, the end goal is to complete the all the assignments, right? So because that's the eligibility criteria for placements, ठीक है. तो सबसे पहले तो आपको assignments complete करने पड़ेंगे. Okay, तो okay. सर VS कोड में एक लाइव सर्वर नाम करके कोई एक्सटेंशन रहता है ना? यस यस रहता है. तो अगर सर हम डायरेक्ट फाइल उससे ओपन ना करके लाइव सर्वर से ओपन करेंगे तो कोई मतलब कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी है या फिर सर नॉर्मली ओपन करना सही रहेगा? लाइव सर्वर लाइक अगर मतलब बहुत बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, एचटीएमएल पेजेस हैं, तब के लिए सही होता है. हाँ, अगर अगर सिंगल पेज है तो अच्छा, फिर कॉपी पाथ कर लो, हो गया. ओके ओके ओके, ठीक थैंक है. यप. ओके, आदित्य, आर यू प्रेजेंट? यस। ओके. अनस, अनस हियर. आशीष. नो सर। ओके. दिलीप. हिमांशु इज हियर. अमजद. No. Nabil is here. मैं भी नहीं सर। Yeah, Samad is here. Okay. नो सर। Narayan. The I guess no. Nikhil is here. Prakash. Okay. Pratik. Okay. I don't know why guys are not here on Sunday. Pratik here. Hello. Okay. Rahul. नो सर। Okay. Ranbir. हाँ यस सर। सर। Okay. Sandeep is here. Sangram. Shivam. Shivraj. Yes. Subhajit is here. Vikas is here. यस सर। Okay, 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 okay. Okay, probably we'll be having classes in one in weekend, like sorry, one in weekdays and one in weekend. Okay, and go through the assignments. Okay, like try to find some good pages. So there is one Airbnb page I found out. Okay, I will just share the link with you.
Try to do that page. Okay, maybe like सर आपने अपना जो यूट्यूब का चैनल है वो शेयर नहीं किया। oh yes, yes, I will just open it now. ठीक है, मैं अभी अभी खोलता हूँ उसको. Okay, so we have 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, makes sense. Okay, okay, let me stop the presentation, then I will open. Okay, okay, there are lots of other videos coming on. So you may find some older videos, and I will try to have some newer ones also. Okay, so the channel link is here. Okay, for the uploads. Okay, there is a accordion using HTML and CSS without JavaScript. I have added basic toggle is there, creating a to-do list. No, that is with JavaScript. Okay, go through it. I have added some good items over here, and this the today's video, and I will be adding it. Okay, here comes the link in the chat. सर प्लीज प्रेजेंट कर देना, फ़ोन 2% है, बंद होने वाला है. ओके. हो गई सर। ओके. रणवीर का मार्क कर दिया था हमने. यस सर। अच्छा अच्छा, हम क्या की हो गई बैटरी ख़त्म. ठीक है गाइज, एंजॉय करो, बट उससे पहले असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लेना, एंड लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीक. बाय. बाय सर. बाय गाइज.